Today we will be discussing about the basic sleeve. आप यहाँ पे देख सकते हैं there are three ladies with three different body postures. One of them says perfect. Middle one में जो है you can see it says forward and then we have upright. आपको यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इन तीन डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स के लिए आपको किस तरीके से स्लीव बनानी है. नेक्स्ट आपके पास है स्लीव टर्मिनोलॉजी. स्लीव टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है यू हैव द क्रेन लाइन, बाइसेप्स लेवल, स्लीव कैप, कैप हाइट, एल्बो लेवल, रिस्ट लेवल, नॉचेस एंड कैप ईज. ये आपको इनकी सारी डिटेल्स जो हैं जब हम पैटर्न बनाएंगे तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, बट बेसिक मैं आपको बता दूँ कि दिस इज़ योर बाइसेप्स लेवल. ठीक है, ये जो आपका मसल होता है बाजू के ऊपर, दिस इज़ दैट लेवल ओवर हेयर. Then we have the elbow level यानी कि कोनी का हिस्सा. Then we have the wrist level. इस पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सीम अलाउंसेस ऐड किए हुए हैं. सीम अलाउंसेस की जो डिटेल्स है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन की जाएगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में जो है यू कैन सी स्लीव कैप ईज. ये बेसिकली आपका आर्म जो है वो आर्म होल वाले एरिया पे मैनूवर करता है. सो यू हैव टू ऐड बेसिकली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईज़ इन इट, यानी कि ताकि आपका बाजू जो है वो आर्म होल के हिस्से पे ईज़िली तरीके से मूव कर सके. देन वी हैव द आर्म होल मेजरमेंट. ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका चार्ट है, इसको फिलअप करना है. इसको फिलअप करने का तरीका क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ. स्लीव मेजरमेंट चार्ट यू कैन सी ओवर हेयर. स्लीव मेजरमेंट चार्ट के अंदर जो ये साइज़ 10 है, इसकी तमाम वैल्यूज़ जो यहाँ पे नीचे मेंशन हैं इनको आपने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन देयर सेंटीमीटर वैल्यूज़ ऑन टू हेयर. नाउ देयर इज़ वन वैल्यू यू कैन सी ओवर हेयर, दैट इज़ द आर्म होल मेजरमेंट, दैट इज़ ब्लैंक. ये बेसिकली आपको अपना जो फ्रंट और बैक का जो आपने पैटर्न जो क्रिएट किया है साइज़ 10 का, उसके आर्म होल की मेजरमेंट आपने लेनी है इस तरीके से, जिस तरीके से ये आपको दिखा रहा है. इस मेजरमेंट को लेने के लिए बेसिकली आपको एक ये फ्लेक्स रूलर की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि आपके पास नहीं है तो हम जापानी स्केल से ही इसकी मेजरमेंट लेंगे. जापानी स्केल से मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. और जी यहाँ पे बेसिकली तमाम प्रोसेस मेंशन है कि हाउ यू आर सपोज टू मेक योर स्लीव ड्राफ्ट. तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये तमाम ब्लैंक्स को आपने सेंटीमीटर के अंदर फिलअप करना है. जहाँ पे इंचेस की वैल्यूज़ मेंशन है, इन तमाम इंचेस की वैल्यूज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है. सेम गोज़ ऑन द नेक्स्ट पेज. आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है. वंस यू हैव मेंशनड ऑल द centimeter values onto these two pages, one of them is this page and the second one is this page, then you are supposed to start making your draft. This is our front pattern. ठीक है, फ्रंट पैटर्न के आर्म होल की मेजरमेंट आपने लेनी है और इसी तरीके से आपने बैक की आर्म होल की मेजरमेंट लेनी है. ये मेजरमेंट कैसे लेते हैं? For that you actually need a flex scale, but flex scale अगर आपके पास नहीं है तो we will be just using our Japanese scale. Now it's a bit tricky to take measurement of your armhole with the help of this Japanese scale, so just watch and learn. करना आपने ये है कि you have to make your scale, I mean this is the starting point. ठीक है, that's the starting point and this is how the measurement is going. तो आपने स्केल को इस तरीके से you have to make it stand और बिल्कुल लाइन के ऊपर आपने जहां तक ये easily bent होता है आपने वहां तक इसको bend कर दिया. Now what I'm going to do is I'm going to release my left hand and I'm gonna hold this area and now I'm going to release my right hand. So you have to bend it like this. Next, make sure के ये हिस्सा हिले ना, and then you have to turn it like this and then release it and then hold it from here and then keep going all the way till this point. Now the measurement is coming 23.1.
यू हैव टू डू योर ओन मेजरमेंट। आपकी मेजरमेंट जो है वो 23.1 के इर्द गिर्द ही कहीं पर लाई करेगी। ठीक हो गया। सिमिलरली यू विल टेक द मेजरमेंट ऑफ योर बैक आर्म होल। इसी तरीके से आप स्केल को ऐसे करेंगे, आप इसको बेंड करेंगे एंड ऑल द वे टिल द एंड पॉइंट। We will be making our sleeve pattern. ठीक है। So these are the tools that you will be requiring to make your sleeve pattern. Let me put them aside. Now this is my sheet. आपने basically जो है I'm using a newspaper sheet, but you're supposed to use your graph sheet, और graph sheet को जो है वो आपने in this time you have to keep it lengthwise. Don't keep it like in this position. So you're supposed to keep it this way. और रफली जो है वो आप फ्रॉम दिस एज ऑफ योर ग्राफ शीट आप वहां से 3 बॉक्सेस छोड़कर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इन द मिडल, शीट का जो मिडल है वहां से आप रफली जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन माय केस आई विल जस्ट पॉइंट दिस एज माय starting point, that is the A point. In the first step it says A to B is equals to full length and the value is 55.9 centimeters. So what I'm going to do is I'm going to draw a straight line from here that will be 55.9 centimeters. So this is my A point and this is my B point. Next is A to C is cap height, that is 14.6. So you have to come from here 14.6 centimeters downwards. This is your C point. Next is C to D is 1/2 of C to B. My D point. Now this is your D point. In the next step, he is asking you to go from D to D dash, that is 3/4 of an inch. तो आपने इस पॉइंट से 1.9 सेंटीमीटर ऊपर एक निशान लगाना है और इस निशान का नाम है D dash. And then he is saying square lines from A, C, D dash and B. So you're going to take 90-degree angle on A, a 90-degree angle on C, D dash, and then you are supposed to take a 90-degree angle on B. नेक्स्ट स्टेप में आपको कह रहा है आर्म होल मेजरमेंट इज इक्वल्स टू, मेरी वैल्यू आ रही है 22.6 सेंटीमीटर्स और लिखा हुआ है प्लेस ए रूलर एट ए एंड पिवट अंटिल द मेजरमेंट टचेस द बाइसेप्स लाइन एंड मार्क. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं. आई विल कीप माई स्केल ऑन द ए पॉइंट, ठीक है, और मैं इसको ऐसे पिवट करूंगा, इसको पिवट करना कहते हैं, ठीक है जी. सो आई विल पिवट इट अंटिल माय बाइसेप्स मेजरमेंट की जो आपके पास वैल्यू आ रही है, मेरे केस में 22.6 है, तो जैसे ही 22.6 सेंटीमीटर यहाँ पे टच करेगी तो यू हैव टू पुट अ मार्क ओवर हियर. So this is the mark of 22.5 and this is 22.6 right over here. He is asking you to just put a mark over here, ठीक है. You are not supposed to make a straight line. You're just supposed to put a mark over here. Next step में आप पढ़ें तो वो आपको कह रहा है कि C to E is 1/2 of biceps measurement mark. Now biceps की जो आपकी measurement है
वो आपको कह रहा है कि ये C है और यहाँ पर आपने 1/2 ऑफ, इस डायरेक्शन में 1/2 ऑफ बाइसेप्स मेजरमेंट आपने एक निशान लगाना है. So we'll just stop over here. Our biceps measurement is 33 centimeters and 33 का half जो है that is 16.5. So I am going to put a mark of 16.5 centimeters over here. It's coming right over here. Now I have two marks over here if you can see. एक mark ये है और एक mark ये है. Now he's saying compare placement of the two marks and mark biceps in between label E. यानी कि इन दो पॉइंट्स का जो सेंटर है उसको आपने, दिस इज द सेंटर कमिंग, इस पॉइंट को आपने E पॉइंट कहना है. ठीक हो गया. एंड नेक्स्ट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज जॉइन A with this middle E point. और फिर उसने आपको कहा है कि यू कैन मेजर इट, यू हैव टू मेजर इट and divide into fourths and mark and label as shown. मेरे केस में A to E जो है वो 22.3 सेंटीमीटर्स आ रहा है. When you divide 22.3 by 4 you get 5.57 centimeters. So that is approximately around 5.6 centimeters. So what I'm going to do is मैं यहाँ से 5.6 सेंटीमीटर पे निशान लगाऊंगा, दोबारा से 5.6 पे निशान लगाऊंगा, दोबारा से 5.6 सेंटीमीटर पे निशान लगाऊंगा, just like this. So I have these 3 points coming over here and it's divided into 4 portions. The label of these points are G, H and K. Similarly, in the next step, कह रहे कि C to F is equals to C to E. F is coming over here and C to E is over here. So what you're going to do is you'll measure C to E, that is 16.9 centimeters in my case, and I will make another 16.9 line over here. Now this point is my F point. All I'm going to do is, in the next step he's asking you to join A with F and then divide into fourths, और इसकी भी वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, that is 5.6 centimeters. 5.6 पे एक निशान लगाया, yet again 5.6 पे एक और निशान लगाया, and then again 5.6 पे मैंने एक और निशान लगाया. याद रहे कि आपकी वैल्यू जो है वो मोर और लेस इसी के करीब ही आ रही होगी. This point is L, this point is M, and this point is N. Next step G. B to O is equals to 2 inches less than C to E. So what I'm going to do is, C to E की वैल्यू आ रही है 16.9. 16.9 में से 5.1 सेंटीमीटर हमने माइनस करने हैं. You get 11.8. So I'm going to, this is B and O is supposed to come someplace over here. And my value is 11.8 centimeters. इसी तरीके से वो आपको कह रहा है कि B to P is equals to B to O. So we will get the same value, that is 11.8 over here. This is your P point. Next he is saying draw a line from O to E and P to F. So you will just join E with O with a straight line. Like this. नेक्स्ट स्टेप में आपको कह रहा है जी के G से इनवर्ड्स आपने
1 इंच जाना है, एज से आउटवर्ड्स आपने क्वार्टर इंच जाना है, केस से आउटवर्ड्स आपने 5/8 ऑफ एन इंच जाना है। ठीक है जी। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज take a 90-degree angle over here on the G point, and you need to come 1 centimeter inside. Now this is your reference line over here. इसी तरीके से H से आपने बाहर जाना है 0.6 centimeters, and you have to come outwards 1.6 centimeters from K. Similarly, from L, you're supposed to come outwards 1.9 centimeters. Take a 90-degree angle here. From M, you're supposed to come outwards 0.5 centimeters. And on N, you're supposed to come inwards. That is 1.3 centimeters. Let's move on to the next page. Now he's asking you to make a smooth curve coming over here from F, N, M, L, and A, and then K, H, G, and E. So this is a bit tricky, so I'll just show it to you. What you suppose, first we will be making this line. ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बुक में उसने फ्रेंच कर्व रखा हुआ है, आई एम प्लेसिंग इट द सेम वे. What I'm going to do is I'll put my pencil on the A point like this, and I'll put it over here, and I'll just keep moving my French curve in a way where it can easily meet these 2 points. Like this. You can see that A, this point, and this point are meeting. Like this. Now, in order to make the remaining line over here, there's a simple way of doing it. What you need to do is just take this French curve, flip it horizontal, and then flip it vertical, like this. And you'll be making your remaining line. Like this. You can see over here that I have made this very smooth curved line over here. That is your armhole line. Similarly, you have to make the other line as well. Make sure the curve is coming smooth. Let's move on to the next step. Label elbow level S. So this is your S point. This is your new D point. ये D dash जो है उसने बाद में इसको D में ही convert कर दिया है. Extend line R quarter inch. Draw a line from R to E. So what you're supposed to do is इस point से क्वार्टर इंच आपने आगे जाना है, उस वहां पे आपने निशान लगाना है. क्वार्टर इंच जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.6 सेंटीमीटर्स. Now this point is your R point, and he's asking you to join R with E with a straight line like this. Now in the next step he's telling you about elbow dart. ठीक है, सबसे पहले बात की जा रही है R to T की. R to T is equals to 1/2 of R to D. जितना यहां से लेके यहां तक का साइज है उसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज योर T पॉइंट.
So we will measure it from R all the way till the D point. That in my case it's coming 15 centimeters, and 15 का आधा जो है that is 7.5. So this is my T point coming over here. This is my T point. Next step, R to U. Now U is someplace over here. तो वो आपको ये कह रहा है कि भाई जितना R और T का फासला है that is 7.5 सेंटीमीटर, उतना ही आपने R T से U तक का आपने बनाना है, बट मेक श्योर कि R और U के बीच में जो है आपके 1 इंच का बीच में फासला हो. तो आपको इस स्टेप करने के लिए आपको you need 2 scales. You'll keep one scale over here to measure 2.5 centimeters, and from this scale you will be measuring 7.5. So it's coming right over here. Now distance from here, from this point till this point is 7.5, and from here till here it's 1 inch. That is 2.5 centimeters. So I'll just make a straight line over here. I'll remove this scale and I'll draw a straight line all the way till here. And this point is my U point. O to V. This is O, and I'm going to come inwards 3/4 of an inch. That is 1.9 centimeters. This is my V point. Now in the next step, he is saying draw a line from U through V equals to S to P. जितना साइज आपका S और P का है इसको मेजर कर लें. In my case it's coming 22.3 centimeters. इतना ही मुझे यहाँ पे भी ड्रॉ करना है. This point is W. W to X. W to X is basically equals to O to P. So जितना आपका O से P का फासला है, in my case it's 23.6. तो आपने W पे रखना है स्केल को, और इस लाइन के ऊपर जहां पे आपकी ये मेजरमेंट आके टच करेगी that is 23.6, तो आपने उतनी लाइन ड्रॉ कर देनी है, just like this. Draw a line ending at wrist level. Draw a slightly curved line from X to S to F. So in this case you need a French curve, and all what you need to do is join S and X with a smooth curved line, just like this. So you can see I have drawn this curved line over here. Now in the last step he is saying ease control notches. Now in this ease control notches he is asking you to come half an inch up on this line, that is 1.3 centimeters. आपने ऊपर आना है और वहां पे एक निशान लगा देना है. इसी तरीके से आपने G से हाफ इंच ऊपर आना है, एक निशान लगाना है, और फिर उसी पॉइंट से ऊपर आपने हाफ इंच पे एक और निशान लगाना है. Now in order to make this, you can take your Japanese scale, make it stand like this, and then mark 1.3. So I have one notch coming over here, and I have one notch
over here and one notch coming over here. And our pattern is complete. You can have a look at it.